तुम्हारा पढ़ रहा हूँ, शुआब भी कह रहा था मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको पूछा मैंने। Good morning, everybody. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So I hope that you must have already gone through yesterday's lecture. At least some of you would have gone through it. We are actually trying to see the observability tests, और उसमें हमने आपको कल दिखाया था कि एक थ्योरम स्टेट की थी। एक टेस्ट तो पहले बता दिया हमने कि बाय इंस्पेक्शन अगर आपका सिस्टम जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म में हो, so just by inspection how can you say whether the system is observable or not? You just have to see in the Jordan's canonical form, you have to see the C dash matrix, and if it's all of its entries are non-zero, then you say that the system is observable. But transforming the system to Jordan's canonical form, it involves some mathematics. There is some inversion operation required, and there are other simpler tests through which actually we can see whether the system is observable or not. तो उसमें मैंने एक थ्योरम स्टेट की थी जिसमें हमने बोला था कि आपका सिस्टम ऑब्जर्वेबल तभी होता है if the observability grammar that we had discussed, that we had defined yesterday, if that's non-singular, plus the observability matrix which has a particular structure, if that matrix is has got rank equal to n, we say that the system is observable. Now, before we proceeded to actually prove that theorem, I showed you the general configuration of an observer, and we derived some equations. We derived some observer equations. So I'll just start with that. So, today is 17th. So जब हमने ऑब्जर्वर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कल, that was something like this. So this is okay. We showed it for the plant. We showed the simple equation. So we have the plant like this. X dot equal to x plus mu. This is the plant. You apply input u to it. And here you get, this is the actual physical state vector. This is your C, and this is the actual output Y. Now, observer configuration is something like this. So this U actually, you give to the model of the plant, that's B. This is plus and this is plus. This is the chain of n integrators. This is x, this is x dot, and this is your A. And this is actually x hat, because this is the estimated one. This is x hat dot, and this is C. And from this you get y hat, which is the estimated output. Then you take the comparison of these two. Like this. This is plus and this is minus. You generate the error signal, which we had called E1, and then you feed it back through a gain vector, observer gain vector L. And you add it up here. This is basically the observer. This is the observer. And this estimate you will be later on using in the state feedback controller. Rather than using this x, you'll be using this x hat. और इसकी जो equations हमें end में मिली थी, observer की,
That was something like this. And by the way, let me tell you, I forgot it yesterday. This observer is known as Leuenberger observer. After the name of the person who actually gave the concept of this observer. तो इसका हमने डायनामिकल इक्वेशन इसकी हमने कल ऑब्टेन की ऑब्जर्वर की, एंड फाइनली वी गॉट समथिंग लाइक दिस. द डायनामिकल इक्वेशंस फॉर दिस वी आर ऑब्टेन्ड एज E is equal to A minus LC. E dot is equal to A minus LC into E, where this L is actually the observer gain vector. Isn't it? And what is E equal to? E is equal to X minus X hat. So I told you yesterday that you have to design. Now, initially, when you were going for an open loop observer, in that particular case, you simply had A dot equal to AE. That means the fixed dynamics for the system, and the dynamics of the observer same as the or of the same speed as the system speed. जो सिस्टम की स्पीड है उसी स्पीड का ऑब्जर्वर भी था, because its eigenvalues were dependent upon the matrix A. But with this observer configuration, which is actually a closed loop observer, we have got the dynamics of the observer governed by the eigenvalues of this matrix, and the eigenvalues of this matrix are dependent upon L. So you have to design L in such a way, subject to the condition that the system is observable. Subject to the condition that the system is observable, you can design L in such a way that the eigenvalues of this matrix A minus LC can be placed anywhere in the complex plane. And since we want to have the stable dynamics for the observer, we would actually place the eigenvalues of the observer in the left-hand side of the S-plane. That is one thing, left half of the complex plane for the observer dynamics to be stable. And second thing that I had told you yesterday, we want the observer dynamics to be faster as compared to the system dynamics, because we want that the state feedback controller should get the value of x instantaneously. In order to give it instantaneously, because we are not using sensors would normally give it very fast. But since we are not using sensors for the reasons I have already explained, we want the dynamics to the observer to be at least 4 times faster than the system dynamics. Means इसकी जो eigenvalues की location है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इसकी dynamics 4 times faster decay हो, इसका जो transient है, और इसका जो value है x का, it should tend to x hat as soon as possible. So when you design the observer, these are the various design considerations in observer. One is that the observer dynamics must be stable. What are the design considerations? For an observer, one is that observer dynamics must be stable. And if your system is observable, you can actually design L in such a way that the observer dynamics can indeed be made stable. You can actually have the eigenvalues of the observer in the left-hand side of the S-plane. But that's not sufficient. It not only needs to be stable, it needs to be sufficiently fast. The observer dynamics must be significantly faster as compared to the plant dynamics. Observer dynamics must be significantly faster as compared to the plant dynamics. I hope you understand how the observer dynamics depends upon the eigenvalues. I guess you must have been taught about these things in your fourth semester. जैसे मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ये मुझे एक्सप्लेन करना नहीं था यहाँ पे, ये आपको ऑलरेडी पता होगा. दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसका पोल यहाँ पे लोकेटेड है.
So it's a stable system. Can you tell me what will be, how can you obtain the speed of the dynamics of the system? That means how fast its transients will decay. What will that depend upon? टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट. मैं ग्राफ से कह रहा हूँ. यहाँ पे जो इसकी लोकेशन है, what is that actually? What is this location actually? This is actually -1/t. First order system का equation होता है characteristic equation, that is 1 plus st equal to 0, isn't it? So s is equal to -1/t. Means जितना इसका नेगेटिव हाफ ज्यादा होगा उतना t कम होगा, बिकॉज जितना t कम होगा उतना ही पोल इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. तो t का कम मींस जितना ही पोल the farther it will be from this imaginary axis, the faster will be the system dynamics. Do you understand this? Yes. Similarly, if you have a second order system, मान लो आपके पास एक second order system है, like this. It's an underdamped system. There will be oscillations in its response, but it is a stable system. It means the oscillations will decay after some time, and the speed of the system is what we call characterized or quantified by means of its settling time. Can you tell me what will be its settling time depending upon? Anybody? What is the settling time of an underdamped second order system given by? किसी को भी नहीं पता? Settling time of an underdamped second order system is given by 4 upon xi omega n for plus minus 2% tolerance band. You know, the response of an underdamped second order system to step input is going to be something like this, isn't it? Yes, sir. ये आपका yt है, ये output है. So mathematically speaking, the system goes to the steady state as time t tends to infinity. But we try to quantify it on the basis of when your system output settles within some particular tolerance band, within some particular value with respect to the output steady state value, we say that the system has settled down. So we define this steady setting time with respect to plus minus 2% tolerance band or with respect to plus minus 5% tolerance band, depending upon the application. Plus minus 2% tolerance band के लिए settling time का value ये होता है 4 upon xi omega n. और अगर आप पोल इसमें s plane में देखो, इसका जो रियल पार्ट है that is minus xi omega n, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है that is omega n beta. Means इसका जो रियल पार्ट है that will define the settling time. और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस देता है आपको. तो मींस जितना पोल जितना the farther it is from the imaginary axis, the pole pair, because it's complex pole, so they will be conjugates. The farther they are from the imaginary axis or more the real part in the negative half, the faster will be the settling. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका सिस्टम जो है प्लांट जो है, this is your S plane, this is sigma j omega. अगर इसकी पोल्स यहाँ पे लोकेटेड हैं प्लांट के, अगर ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और उसकी पोल्स यहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑब्जर्वर क्योंकि इससे फास्ट होना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम्स फास्टर, तो उसका जो रियल पार्ट है इट शुड बी अराउंड 4 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ द प्लांट पोल्स. ये लगभग यहाँ पे होना चाहिए. एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो दीज मे बी द ऑब्जर्वर पोल्स, देन ओनली इट कैन बी फास्टर. Are you getting me? Yes, sir. ऑब्जर्वर डायनेमिक्स जल्दी सेटल हो जानी चाहिए ताकि कंट्रोलर को पता ही नहीं चले कि उसका जो वैल्यू है वो सेंसर से आ रहा है, वो सेंसर से आ रहा है या ऑब्जर्वर से आ रहा है. मींस ऑब्जर्वर डायनेमिक्स मस्ट बी सिग्निफिकेंटली फास्टर एज कंपेयर टू द प्लांट डायनेमिक्स. डू यू गेट मी? तो ये कुछ डिजाइन कंसीडरेशंस है आपको इन दिस ऑब्जर्वर को डिजाइन करने में, लुइनबर्गर ऑब्जर्वर को या इन जनरल किसी भी ऑब्जर्वर को डिजाइन करने में
पहली मेन कंसिडरेशन तो ये है कि ऑब्जर्वर डायनेमिक्स स्टेबल होनी चाहिए, तभी आपका x जो है वो x हैट को टेंड कर सकता है, तभी आपका x जो है वो x हैट को, या x हैट जो है वो x को अप्रोच कर सकता है। और दूसरा, दैट इज नॉट सफिशिएंट, what else you have to make sure is that the observer dynamics must be significantly faster. As I told you last time, it must be at least 4 times faster than the system dynamics. Then only your observer can be of any significance. Now this is about the observer configuration. Now I was yesterday telling you that because basically we were trying to specify the tests for observability, how to check the system for observability. वो हम कोशिश कर रहे थे देखने की। तो उसको हम मैंने उससे पहले आपको कहा कि पहले हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ऑब्जर्वर की, उसी बेसिस पे हम फिर एक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑब्टेन करेंगे बिटवीन कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, और उसी के बेसिस पे हम वो टेस्ट डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपका जो ऑब्जर्वर का इक्वेशन अब है वो है E dot is equal to A minus LC into E. Now keep this equation at the back of your mind. Now consider an imaginary system with the following state equation. We consider an imaginary system with the following state equation: xi dot equal to A transpose xi plus C transpose eta. I consider an imaginary system with the following state equation: xi dot equal to A transpose xi plus C transpose eta. I'll tell you why I'm introducing this imaginary, or what we normally call as an auxiliary system. Imaginary oblique auxiliary system. This system doesn't exist. Just to obtain the correspondence between the controllability problem and the observability problem, I am considering an auxiliary system with this following equation. Now, we have already studied state feedback controller. So if I have to design a state feedback controller for this auxiliary system, what is the control law? ये इसमें स्टेट है, ये इसमें इनपुट है। सो कंट्रोल लॉ फॉर स्टेट फीडबैक कंट्रोलर I define like this. Normally जो आपका स्टेट फीडबैक कंट्रोलर है, that's given by U is equal to minus kx, isn't it? Where k is the controller gain, x is the state, U is the input. इसमें इनपुट क्या है? इसमें इनपुट ईटा है। So that I put equal to U is equal to kx हमने डिफाइन किया था, या माइनस kx? We defined it as kx, I think. U is equal to kx. So I define minus kx. Minus k define किया था, okay. So we define U is equal to minus kx. So eta I define as minus L transpose into xi. Means यहाँ पे जो k की जगह मैंने L transpose यूज किया, और xi तो स्टेट है ही। Is that clear? L हमने कल देखा था, क्योंकि स्टेट का जो डायमेंशन है दैट इज n क्रॉस 1। ये जो है eta, it's 1 cross 1 for a single input single output system. So this term must actually be 1 cross n, तभी तो ये 1 cross 1 बनेगा। और आपको कल पता है कि ऑब्जर्वर गेन वेक्टर जो है उसका डायमेंशन हमने देखा था कल L, that is equal to n cross 1, तभी हमने यहाँ पे 1 cross n यूज करना पड़ा। तो हमने eta जो है हमने डिफाइन किया ऐसे। तो क्लोज लूप सिस्टम का इक्वेशन क्या बनेगा? क्लोज लूप सिस्टम इक्वेशन क्या बनेगी? So I'll substitute this control law here. I'll get eta dot equal to A transpose xi plus C transpose into minus L transpose xi. Is that okay? Yes, sir. I can write zeta dot equal to A transpose minus C transpose L transpose into xi.
isn't it? अगर आपको याद हो, जो हमारा नॉर्मल सिस्टम हुआ करता था x डॉट इक्वल टू x प्लस बी यू, उसके लिए जब हम कंट्रोल लॉ डिफाइन करते थे स्टेट फीडबैक कंट्रोलर का, दैट यूज्ड टू बी u इज इक्वल टू माइनस kx, और उसमें जो क्लोज लूप इक्वेशन बनती थी वो बनती थी x डॉट इक्वल टू a माइनस बी के इंटू एक्स, और हमने वहां पे प्रूव भी किया था कि subject to the condition that AB pair is controllable, we can design K in such a way that the eigenvalues of this A minus BK can be placed anywhere in the S-plane. Now, correspondingly, we can see here also, यहाँ पे A की जगह A transpose है, B की जगह C transpose है, K की जगह L transpose है. बाकी equations exactly similar है. Subject to the condition that this pair is controllable, that is A transpose C transpose pair is controllable, we can place the eigenvalues, or because the dynamics of this equation will be governed by the eigenvalues of this matrix. So subject to the condition that A transpose C transpose is controllable, this pair is controllable, we can place the eigenvalues of this matrix anywhere in the S plane as per our desire. So subject to the condition, are you following me? Yes, sir. Subject to the condition that the pair A transpose C transpose is controllable, the eigenvalues of matrix A transpose minus C transpose L transpose can be placed anywhere or at any desired location in the S plane. Desired location in the S plane, isn't it? Subject to the condition that the pair A transpose C transpose is controllable, the eigenvalues of matrix A transpose minus this matrix can be placed at any desired location in the S plane. Now we know that किसी भी मैट्रिक्स के जो eigenvalues हैं, they are the same as the eigenvalues of its transpose. Means if A is any square matrix, और A नहीं कुछ और नाम रखते हैं, P is any square matrix, eigenvalues of P will always be equal to eigenvalues of P transpose. Because eigenvalues of P that will be given by determinant of lambda I minus P. अगर ट्रांसपोज लो आप किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके जो डिटरमिनेंट है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है. So eigenvalues of P is equal to eigenvalues of P transpose. So using this fact that eigenvalues of a matrix is equal to the eigenvalue of its transpose. So if you have matrix, if P is equal to, let us say this matrix A minus LC, what will be P transpose? That will be A minus LC transpose. That will be A transpose minus C transpose L transpose. Means ये वाला matrix. Means इस matrix के eigenvalues और इस matrix के eigenvalues same होंगे. Are you getting me? Yes, sir. So in other words, what we are saying is that placing the eigenvalues of A transpose minus C transpose L transpose at any desired location is equivalent to placing the eigenvalues of A minus LC at any desired location, because they are the same. So equivalently, what are we saying is, so that implies placing the eigenvalues of A transpose minus C transpose L transpose at
any desired location is equivalent to placing the eigenvalues of A minus LC at any desired location in the complex field. Is that clear? So that actually means that designing an observer for a system is equivalent to designing a controller for this auxiliary system. For this auxiliary system. So that किसी भी system के लिए observer design करना, it is actually equivalent to designing a controller for an auxiliary system defined like this, whose the matrices are A transpose and C transpose. इसका मतलब ये हुआ कि control observability problem, observability of the original system is actually, the information about observability can be obtained by checking the controllability of this auxiliary system. Are you getting me? Yes, sir. So this actually implies that designing an observer for any given system is equivalent to designing a controller for an for the corresponding auxiliary system. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है, अगर आपका ये जो ऑक्सिलरी सिस्टम है, अगर ये कंट्रोलेबल है, तो आपको जो ओरिजिनल सिस्टम है, जिसके आपका जो गिवन सिस्टम है, जिसके लिए आप ऑब्जर्वर डिजाइन कर रहे थे, तब वो ऑब्जर्वेबल होगा. So that actually implies that if the auxiliary system is controllable, the given system will be, if the corresponding auxiliary system is controllable, will be observable. What will be the condition for controllability of auxiliary system? Auxiliary system आपका ये है, this is the auxiliary system. इसके लिए आप कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर में डिफाइन कर सकते हो यूजिंग दीज मैट्रिसेस. कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर हमने देखा है, उसकी डेफिनेशन कैसी होती है, और साथ ही साथ इसका जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है, इसमें बी की जगह सी ट्रांसपोज है, ए की जगह ए ट्रांसपोज है. इसका जो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है, उसकी रैंक n होनी चाहिए. Isn't it? Are you getting me? Yes, sir. Condition for controllability of auxiliary system. Controllability matrix, controllability Gramian must be non-singular. So how can you define the controllability Gramian of this matrix? इसका controllability Gramian क्या होगा? Anybody? Controllability Gramian हमने already define किया हुआ है. How do you define the controllability Gramian? That will depend upon the system matrices, isn't it? Yes, sir. वो सिस्टम मैट्रिसेस पे डिपेंड करेगा, और इसके जो सिस्टम मैट्रिसेस हैं वो ए और सी ट्रांसपोज है. तो इसका जो कंट्रोलेबिलिटी ग्रामिन है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए,
So how will you define the controllability Grammar of this matrix? वो हमने कल भी डिफाइन किया था. तो इसका जो controllability Grammar है वो हम ऐसे डिफाइन करेंगे. W0T1. इसका हम controllability Grammar let's call it WC only. So that is equal to integral of 0 to T1 e to the power minus A transpose T C transpose C e to the power A transpose T dt. This is the controllability grammar. Sorry, this is not transpose here. This is C e to the power AT. क्योंकि इसके जो मेट्रिसेस है इस सिस्टम के जो मेट्रिसेस है वो A ट्रांसपोज और C ट्रांसपोज ही है. तो इसका कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर नॉन सिंगुलर होना चाहिए. वो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि सिस्टम कंट्रोलेबल तभी होता है अगर उसका कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर नॉन सिंगुलर हो. तो वो वाला प्रूफ यहाँ पे भी फॉलो होके एंड दैट कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर ऑफ दिस ऑक्सिलरी सिस्टम will actually be the observability grammar of the original system. Are you getting me? This is actually the observability grammar of the original system, which is actually the observability grammar of the given system. Are you getting me? तो सिस्टम अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो सिस्टम का ऑब्जर्वेबिलिटी ग्रामर या नॉन सिंगुलर है तो आप उसका ऑक्सिलरी सिस्टम लो और उसका कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर प्रूव करो कि नॉन सिंगुलर है. दैट विल एक्चुअली इंप्लाई दैट द ऑब्जर्वेबिलिटी ग्रामर ऑफ द गिवन सिस्टम इज नॉन सिंगुलर. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग इज कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स जो है ऑक्सिलरी सिस्टम का, हाउ डू डिफाइन दैट? कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स of the auxiliary system so we call it UC. So controllability matrix कैसे डिफाइन करते हैं? BAB स्क्वायर B. यहाँ पे B की जगह क्या है? C ट्रांसपोज. नॉर्मली आपका जो कंट्रोलेबिलिटी ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है दैट इज BAB A स्क्वायर B so on A to the power n minus 1B. Isn't it? So A की जगह C ट्रांसपोज है, सॉरी B की जगह C ट्रांसपोज है, then you have A ट्रांसपोज C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज स्क्वायर C ट्रांसपोज so on A ट्रांसपोज n minus 1 C ट्रांसपोज. So controllability matrix of the auxiliary system is this. For a system to be auxiliary system to be controllable, it must have rank equal to n. सही है? Is that clear? Yes, sir. Okay. आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसका ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं होती. अगर हम इसका ट्रांसपोज लें यूसी का यूसी ट्रांसपोज लें, कैन यू टेल मी व्हाट विल दिस मैट्रिक्स बी? इट विल बिकम लाइक दिस सी सी ए स्क्वायर सो ऑन सी ए रेज़ पावर n minus 1. इसके जो कॉलम्स हैं वो ट्रांसपोज होके इसके रोज बनेंगे. Isn't it? इसका जो ट्रांसपोज है वो ये आएगा if the original which is actually the observability matrix जो हमने कल डिफाइन किया था of given system. So if the controllability matrix of auxiliary system has rank equal to n, corresponding for the given system, the observability matrix of the given system will have a rank equal to n. Is that clear? So that actually means, which actually implies that observability
and controllability problems are mathematically equivalent problems. Mathematically equivalent problems. This is known as principle of duality. We call this principle of duality. That means if you have to design an observer for a given system, you define a dummy system, an imaginary auxiliary system, whose matrices are actually, जैसे मान लीजिए अगर आपका सिस्टम x डॉट इक्वल टू x प्लस bu है और y इज इक्वल टू cx है, और इसके लिए आपको ऑब्जर्वर डिजाइन करना है. You have to design an observer for this system. So first you will check whether the system is observable or not. Observability के लिए आप क्या करोगे? आप इसके डमी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी देखोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी देखोगे. नॉर्मली जब हम कंट्रोलेबिलिटी देखते हैं तो वो डिपेंड करता है ए और बी पेयर पे. तो हम कॉरस्पॉन्डिंग डमी सिस्टम की जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा will have the following structure. That'll be zeta dot equal to A की जगह A transpose X plus B की जगह C transpose, sorry, not X, zeta plus C transpose zeta. The corresponding auxiliary system will have the following system equation. Following state equation इसकी ऐसी होगी, और इसका जो आउटपुट इक्वेशन होगा, आउटपुट इक्वेशन कुछ ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू सी की जगह बी ट्रांसपोज जीटा. दिस विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सिस्टम. और इस सिस्टम के लिए आप यू डिजाइन अ कंट्रोलर फॉर द सिस्टम. You have to first of all check the observability of the original system. In order to do that, you check the controllability of this system. So controllability of this system, we have already defined the controllability matrix for that. वो आप चेक करो ये कंट्रोलेबल है कि नहीं. अगर ये कंट्रोलेबल है तो ओरिजिनल सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, और आप इसके लिए स्टेट फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन करो. दैट विल बी द ऑब्जर्वर फॉर द ओरिजिनल सिस्टम. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. So, अगर आपको याद हो जब हमने कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़े थे उस टाइम मैंने आपको कहा था ड्यूअल सिस्टम मैंने वहां पर भी डिफाइन किया था. मैंने कहा था कि कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म और जो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपस में ड्यूअल स्ट्रक्चर्स कहते हैं. दे आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर. सो उसमें भी अगर आप देखोगे जो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म और ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है उसमें भी जो मैट्रिसेस है A is equal to A transpose, B is equal to C transpose, and C transpose is equal to B. You can check that note and see. I had written that on the notes on that, and that these two systems are said to be duals of each other. So observability and controllability problems, these are basically, they are mathematically equivalent problems. So if you have to check whether the system is observable, that actually is depending upon the controllability of an auxiliary system, which is a dummy system which doesn't exist. So you don't have to do it all the time. You have to keep it in the back of your mind. And you first of all check the observability of the system, and then appropriately design the state feedback, design a what you call controller gain, ये जो observer gain matrix है उसके values of obtain करो, so that you have to place the eigenvalues of that matrix A transpose minus C transpose L transpose anywhere in the S plane. That will actually imply that you have placed the observer pose as per your desired location. Is that clear? Yes, sir. So this is something very important. I told you yesterday also. ये बहुत ही important ये है. So what is the duality now between control and estimation problem? Duality between control and estimation.
observer, because observer is also known as estimator. So if you have a controller and an estimator, control and estimation, कंट्रोल में जो मैट्रिसेस लेते हैं कंट्रोलर डिजाइन करने में, दैट इज ए, बी और कंट्रोलर गेन उसमें के होता है। एस्टिमेशन में आप जो मैट्रिक्स लेते हो दैट इज ए ट्रांसपोज, बी की जगह सी ट्रांसपोज, उसमें जो ऑब्जर्वर गेन मैट्रिक्स वेक्टर होता है दैट्स टेकन एज ए ट्रांसपोज। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस। दैट मींस कंट्रोलर डिजाइन करने के टाइम स्टेट फीडबैक कंट्रोलर में you have to place the eigenvalues of a minus bk subject to the condition that pair AB is controllable. और इसमें आप एस्टिमेशन प्रॉब्लम है ऑब्जर्वर डिजाइन में या एस्टिमेशन डिजाइन में, you have to place the eigenvalues of A transpose minus C transpose L transpose subject to the condition that the pair A transpose C transpose is observable or controllable, जो डमी सिस्टम आपका है। So the controllability of A transpose C transpose pair actually implies the observability of ACPA. So this is the duality between the control and estimation problem. Control and estimation problem, this is how they are related to each other. The control and estimation problem, how they are actually related to each other. This is the what we call the configuration. Are you getting me? Is that okay? Yes, Yeah, sir. Yes, sir. yes, sir. तो अब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा आपकी, अच्छा एक और बात मैं बता दूं आपको याद है जब हमने कंट्रोलेबिलिटी डिफाइन किया था, तो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट पहला तो मैंने आपको दिखाया था कि आपका जो जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म में आपका जो सी मैट्रिक्स है, सी डैश मैट्रिक्स है, उसकी सभी एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। ऑब्जर्वेबिलिटी में हमने देखा और कंट्रोलेबिलिटी में हमने देखा था कि बी की एंट्री सभी नॉन जीरो होनी चाहिए। फिर हमने थ्योरम कंट्रोलेबिलिटी में स्टेट की और कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम हमने ऑब्जर्वेबिलिटी में भी स्टेट की yesterday. And there was one more controllability test wherein I had told you that if the given system is in controllable canonical form, you don't need to perform any test. You can immediately conclude that the system is controllable, because only controllable systems can be put in controllable canonical form. Same way, you have another test for observability. So I will just put this state something. If the given state space model is in observable canonical form, the property of observability is implied, and you don't need to perform any test to check the observability. Observable canonical form का structure कैसा होता है? Observable canonical form, if you have a system in observable canonical form, for example, x dot equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du. अगर ये if this is in observable canonical form, always the structure of this A in this case,
ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यस, एनीबॉडी? यस, yes, tell me. Sir, it is a full rank matrix. हाँ, ए ट्रांसपोज हम इसमें लेंगे तो इट वुड बी अलोंग द रो 0 0 अप टू मुझे ए का स्ट्रक्चर बताओ, ए का स्ट्रक्चर बताओ ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में. It will be like this: 0 1 0 so on up to 0, isn't it? 0 0 1 so on up to 0, like this. 0 0 0 so on up to 1, ऐसे, है ना? तो लास्ट वाले रो में you have got minus alpha n minus 1 minus alpha n minus 2 so on, minus alpha 1 और minus alpha 2 and minus alpha 1. सही है ना? This is what C is like. Sorry, A. और C क्या होता है इसमें? क्योंकि B में तो एंट्रीज होती है, नॉर्मल एंट्रीज होती हैं, और C वाला मैट्रिक्स जो इसमें होता है, that is like this. नहीं, C तो रो ये है. It's like this. C is equal to 0 0 so on up to 1. सही है ना? यस सर। तो इसका अगर आप कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट करो, इसका ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट करो, इसका ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स क्या आएगा? ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए यू नो दैट द ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स मस्ट बी अ फुल रैंक मैट्रिक्स. इसका जो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स होगा, दैट इज यू नो, दैट विल CA स्क्वायर so on up to CA raised to n minus 1. सही है ना? C तो ये है, पहला वाला रो जो इसका आएगा that will be 0 0 0 so on up to 1. और भी C तो है, C तो दिया हुआ है. On the same pattern on which we have proved that the controllability matrix for controllable canonical form is always non-singular, on the same pattern we can prove this also. What will be CA equal to? C is like this. What is A? A ये वाला matrix है. That is 0 1 so 0 so on up to 0, 0 0 1 so on up to 0, like this 0 0 so on up to 1, and minus alpha n minus 1 so on minus alpha 1. जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे, what will you get as the value? इसका क्या वैल्यू आएगा? यार तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? So minus alpha 1. The first entry will be 0. Second entry will be 0. Last but one entry will be 1, and last one will be minus 1. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका सेकंड रो बनेगा इस मैट्रिक्स का. इसी तरीके से आपको याद है ना, मैंने कंट्रोलेबिलिटी के केस में भी आपको दिखाया था ऐसे ही. Yes, sir. तो ये जो सेकंड रो इसका ये आएगा, तो आप जैसे CA स्क्वायर ऑब्टेन करोगे, आप देखोगे कि 1 जो है इधर इधर की ओर चलने लगेगा. तीसरे वाले में 1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे माइनस अल्फा 1 होगा, एंड देयर विल बी सम नॉन जीरो एंट्री है. आर यू गेटिंग मी? यस सर। इज दैट Yes, क्लियर? sir. So similarly, when you will perform up to CA raised power n minus 1, you will get a structure wherein you will have along this off diagonal पे 1 होगा, और नीचे वाली सभी एंट्रीज उसकी नॉन जीरो होंगी. आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा फाइनल, इस सिस्टम का फाइनल, इस कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है, वो कुछ ऐसा होगा. It will be 0 0 0 so on 1, then 0 0 0 यहाँ पे 1 और minus alpha 1, और फिर ये ऐसे ही ये 1 यहाँ पे, when you will perform all this operation you will have 1 along this, and here will be non-zero entries यहाँ पे. Are you getting me? Yes, sir. यस सर। So this sort of matrix is always a full rank matrix because it has got a 1 along the, उसमें आ रहा था जो हमने वाला ऑब्टेन किया था, उसमें 1 यहाँ पे आ रहा था. It was coming out to be a lower triangular matrix if I remember. तो यहाँ पे ये ऑफ मैं
एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, इसका ऑफ डायगोनल जो है वो 1 है, एंड ये वाला डायगोनल ये 1 है, so it's always going to be a full rank matrix, so you don't need to check its rank. So for a controllable observable canonical form, you'll find that it's always observable. That means observability matrix will always be a full rank matrix. So you don't need to check whether the system will be observable or not. You can immediately conclude that it will be observable. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, दूसरा हमने जो स्टेटमेंट कंट्रोलेबिलिटी के केस में प्रूव किया था वो ये था कि कंट्रोलेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है, कंट्रोलेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज नहीं होता है. दैट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोलेबिलिटी इज इनवेरिएंट अंडर एनी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे ऑब्जर्वेबिलिटी के केस में हमने स्टेट किया था, सिमिलरली फॉर दिस ऑब्जर्वेबिलिटी आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी is invariant under any similarity transformation. That means if the original system is observable, the transformed system will also be observable. Or if the original system is not observable, the transformed system will also be not observable. For example, if you have a model x dot plus is equal to ax plus bu, y is equal to cx plus du. d तो नहीं रखते हम, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे. डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन x is equal to pz. What will I get this as? This will be z dot equal to a dash z plus b dash u, y is equal to c dash z. Yeah. A dash is equal to P inverse of AP, B dash is equal to P inverse of B, and C dash is equal to CP. So observability matrix of the transformed system will be observability matrix of the transformed system. We call that as UOZ. There'll be observability matrix defined as, so you'll have C dash here, and what else? What is the structure of this observability matrix? It's defined like this. Sorry. So you have U naught is equal to C dash A dash, C dash A dash square, so on. C dash A dash is for n minus. Now U naught is equal to, what is C dash equal to? C dash is CP. So you have C dash here CP, and instead of A dash you have P inverse of AP. Then here you have C dash of, instead of C dash you have CP, there you have A dash square. Means P inverse AP दो बार. सही है? Which is actually equal to CP. This is I. So this is CAP. This is I and this is I. So this is CA square P, and similarly here you have CA is for n minus 1P. So if you take this P out, so you have C, CA, CA square for CA is for n minus 1 into P. Okay? Yes, sir. This is the observability matrix of the original system, that is UOX into P. Since P defines the similarity transformation, it is a full rank matrix, it has rank n. And UOX is the observability matrix of the original system. So if the original matrix has rank n, then the product of two rank n matrices will be a rank n matrix, and UOZ will also be a rank n matrix. Isn't it? But if UOX is rank deficient, that means इसके अगर rank कम है, तो उस केस में आपका जो product उसका होगा वो भी rank deficient होगा, तो UOZ की rank भी n से कम होगी. That means if the original system is observable, the transformed system is going to be observable. And if the original system is not observable, the transformed system will also be not observable. That means the property of observability is invariant under any similarity transformation. It's but natural because observability is a system property. It cannot change it should not change by changing the representation of the system mathematically. So just like in case of controllability, we have proved that if the original system is controllable, the transformed system will also be controllable. Same way, if the original system is observable, the transformed system will also be observable. Is that clear? Sir.
एक और जो हमें चीज प्रूव करनी है वो ये है कि अगर आपका सिस्टम ऑब्जर्वेबल है, then a similarity transformation will exist, which will always exist, which will convert it into observable canonical form. जैसे हमने कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में देखा था कि अगर आपका सिस्टम कंट्रोलेबल है तो आप हमेशा एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो जो कि उस सिस्टम को कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करे. On the same lines, if we have the original system is observable, we can always define a similarity transformation which can transform this system into observable canonical form. That we'll do tomorrow and in the next class, and we will also talk about the observer design, how actually design the observer. वो भी हम next class में उसको discuss करेंगे. So I think at the most we'll have 2 more lectures for this course. One, I guess Friday is a holiday. So most probably we'll be able to complete this course in the next Tuesday's lecture. Okay. Yes, sir. Meanwhile, I'm getting the tutorials prepared for you related to these controller design, observer design, other things which have not been covered in the tutorial so far. So meanwhile, you can just from the books, you can just go through some numericals and see some numericals based on controller design, as well as get some idea also on how an observer is designed for the system. Is that okay? Yes, sir. I'll stop here. Just go through these things. These are important things. No doubt books में लिखी होती है ये चीजें, लेकिन classroom का effect जो है वो different होता है. So if you have any query, anything, you can just contact me personally. You can just contact me through mail. You can call me whatever way you want. You can just get in contact and just talk to me about if you have any problem regarding this. Is that okay? Okay, sir. Tomorrow will most probably be your last lab class. So वैसे experiments तो almost complete हो गए. So we are planning a MATLAB session tomorrow related to control system simulations. तो वो हम कल करेंगे. उसके बाद आपका जो lab class अपनी खत्म हो जाएंगी. Just prepare the lab reports also properly. And I think you have already got the dates for the lab examination. The lab examination is going to be conducted on that particular date, and we'll be checking your reports and also checking what we have actually done in the lab. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. You can just leave. I'll stop it here.